Fine. See, let's take an example. Okay, let's say if I draw a line and I give you a normal scale that you have. Okay, and I ask you to measure this length. And let's say you measured and you found length measure करके I am getting some 14.3 centimeter. Okay, from your normal scale if you measured and get 14.3 centimeter. Okay, but can we say for guarantee that it is exactly 14.3 centimeter? ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते ना, मतलब ठीक है, दो वी आर एबल टू सी द स्केल, सी द लाइन एंड वी कैन से कि हाँ चलो मुझे लग रहा तो है 13.3 14.3 है, बट एग्जैक्ट बोल सकते हैं क्या? एग्जैक्ट नहीं हो सकते, बट हाँ आई कैन से दैट कि एटलीस्ट 14 तो है, ये कंफर्म है. ठीक है, दिस 0.3 समथिंग दैट इज स्लाइटली डाउटफुल कि whether it is exactly 3 less than that or more than that, isn't it? Because sometimes what happens, it may seem, if you look at the scale, okay, it may seem that line is still here, okay, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, but पता नहीं थोड़ा सा it can be off, right? It can be slightly here or slightly here also, isn't it? Is it making sense what I'm trying to say? Okay, you must know that your normal scale का least count कितना है? What is least count? Minimum measurement possible from that particular measuring instrument. Okay, so it is actually how much? 0.1 centimeter, or we can say 1 mm, isn't it? So that much error, तो at least it will be there. मतलब ये 0.1 सेंटीमीटर जो है ये हमेशा डाउटफुल ही रहने वाला है, समझ रहा है? मतलब if I write 14.3 centimeter, actually I should write like this. I should write 14.3 plus or minus 0.1 centimeter, because I'm not sure about the last digit. Okay, this is the unsure digit. Get the point? Okay, and this is called as the error. This is the error in the measurement. So this is the actual measurement, but this is the error in the measurement. Is it making sense? Okay, so generally it is, if you do experiments in lab, okay, just for example you will have physics lab also. Okay, वो lab में you will do experiments, you will probably take 5 or 6 readings, and then you present your answer, you take average and you say this is my answer, right? Okay, right now they don't push you to write the errors. Okay, but right now let's say for example if you calculate resistance, you will like चलो calculate करके मुझे resistance आया 40 ohms, so we are fine with this. Okay, but when you go to higher standards, you cannot give the answer as 40 ohms. Okay, you have to specify what is the error in the measurement, whatever error it might be, plus or minus 5 ohms or whatever. In fact, when you buy any device, so if you take a charger, उसके ऊपर भी लिखा रहेगा कि 2 ampere plus or minus 0.2 or something like that. They will not write exact measurement, हमेशा error भी देंगे उसके साथ. Have you noticed that? Okay, error का मतलब क्या है कि हम लोग sure नहीं है कि exactly वही value है कि नहीं. ठीक है, the value can be off by certain value. Okay, so that off या जो mistake हो सकता है इसको हम error बोलते हैं. Generally we say that कि there are 2 types of error that is possible. Okay, well, broadly we classify errors in 2 ways. One is called as systematic error, another is called as random error. Now you can have more categories depending on the books, but broadly you can classify into systematic and random. The meaning is very simple. Systematic means there is a way to correct it. Okay, so there is some mitigation way. Okay, for example, let's say I have a scale which is broken. एक स्केल लिया और वो टूटा हुआ है, समझ लो क्या बोलते हैं उसमें 0 का मार्क है ही नहीं, इट डायरेक्टली स्टार्ट्स फ्रॉम 1. ओके, तो आई नो दैट कि ये स्केल में अगर 4 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हैं, इट्स नॉट 4 सेंटीमीटर, इट इज लेस देन दैट. अगर ना पॉइंट ना, ठीक है. ओके, और आई माइट हैव अ एमीटर व्हिच इज नॉट करंटली रीडिंग एट 0. ओके, इसका डिफॉल्ट 1 पे सेट हो गया फॉर एग्जांपल, बट आई नो द एमीटर इज वर्किंग फाइन, द ओनली थिंग इज शायद इसका थोड़ा डायल टेढ़ा हो गया. ओके, तो प्रॉब्ली आई नो कि इसमें अगर 4 एम्पियर मेजर कर रहे हैं तो इट्स नॉट 4, इट इज प्रॉब्ली 3. I get the point ना, मतलब तो faulty instrument है, ठीक है, या the process used was not correct in that experiment. So I know कि if I correct this, there are steps 1, 2, 3. I went from 1 to 3 directly. Probably I did not know. Okay, I missed the skip. I skipped a step or something like that. समझ में आया ना? तो अगर ऐसा कुछ है जिसमें correct कर सकते हैं, that is systematic error. समझा गया? ठीक है. और अगर रैंडम मतलब क्या है, we can't do anything about it. For example, if I am working on a sound का experiment, okay, मैंने सब साउंड प्रूफिंग करके रखा है, सब बंद करके रखा हुआ है. ओके, बट कितना भी साउंड प्रूफ करो, ठीक है, इफ वी आर मूविंग या हम बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कुछ सामान बिठा के रखा तो साउंड क्रीप ही नहीं हो सकता है, राइट? इफ यू आर डूइंग अ वेव का एक्सपेरिमेंट, देयर आर सो मेनी वेव्स, राइट? सेस्मिक वेव्स है, थोड़ा विंड भी चल रहा है तो वेव्स क्रिएट होता है, कुछ भी हो सकता है. मतलब तो यू कैन हैव n नंबर ऑफ इंटरफेरेंसेस, इजंट इट? ओके, या फॉर एग्जांपल you can have experiment like this also. You said you are measuring time period of a pendulum. Okay, now I know that time period depends on acceleration due to gravity. Okay, and that value is not same, it is different in equator, different in poles. Tropic of Cancer में अलग रहेगा, तो region to region ये g का वैल्यू चेंज होता है.
9.8 इज द एवरेज वैल्यू, हर जगह 9.8 थोड़ा होता है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो अगर टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं पेंडुलम का, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट यू माइट हैव सम एरर, यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट वैल्यू, और द वैल्यू में डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, isn't it? And you can't do anything about it because that's how it was. अर्थ में g is not constant, तो what do we do? कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? ऐसे सब एरर्स को रैंडम बोलते हैं, जिसमें ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते। उसको रेक्टिफाई तो नहीं कर सकते, बट उसको मिटिगेट करने का तरीका क्या है? यू टेक लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स एट डिफरेंट प्लेसेस। तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम मेजरिंग टाइम पीरियड, इफ यू वांट द वैल्यू, तो यू विल टेक सम वैल्यूज इन ये ए रीजन में लिया, बी रीजन में लिया, सी रीजन में लिया, देन यू probably change the length and see what readings you are getting and things like that. Okay, the only thing is you can take some permutation and combination, अलग अलग कॉम्बिनेशन लो, अलग अलग परम्यूटेशन लो, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस पे करो, यू जस्ट वेरी थिंग्स एंड यू ट्राई टू गेट द एवरेज वैल्यू। मतलब इसमें एरर को तो ठीक नहीं कर सकते, तो थोड़ा कम कर सकते हैं बस, इज मेकिंग सेंस? ठीक है, तो ब्रॉडली एक ऐसा एरर है जो ठीक कर सकते हैं, और एक ऐसा एरर जिसको ठीक तो नहीं कर सकते, वो कम कर सकते हैं बस। समझ में आया क्या? तो वी डू बोथ एक्चुअली, हम लोग सिस्टमैटिक एरर भी रहेगा तो ऑल्सो वी टेक लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो यहाँ पे विल राइट कि देयर आर दिस काइंड ऑफ एरर्स वेयर it can be removed by certain process. Okay, example instrumental error और procedural error, है ना? procedural error, ठीक है, and things like that. Okay, और यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे it cannot be removed. Okay, but we can get an average value, okay, by taking large number of readings, and we assume that this average value will be closer to the real value, because the real value तो किसको भी नहीं पता, समझ में आएगा? ठीक है, so that's how we classify errors into systematic and random. अब इसमें और भी लोग बोलते हैं ह्यूमन एरर, ये एरर, वो एरर, ठीक है, बट ब्रॉडली यू शुड अंडरस्टैंड कि सिस्टमैटिक एरर दो एरर्स है जिसको ठीक कर सकते हैं, रैंडम एरर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है? ओके, अच्छा, अभी लेट्स से आई एम परफॉर्मिंग सम एक्सपेरिमेंट, ओके, लेट्स से दे गिव मी अ वायर और लेट्स से दे गिव मी अ पेन। हैव यू हर्ड अबाउट वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज सुना है क्या? ठीक है, तो दिस आर ऑल लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस। अब नॉर्मल स्केल में आप mm तक मेजर कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर में थोड़ा और जा सकते हैं, माइक्रोमीटर तक जा सकते हैं, ठीक है? तो वो सब इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करके वी कैन मेजर लेंथ और विड्थ। जनरली व्हाट दे डू इज इन योर 11th स्टैंडर्ड दे विल गिव यू सम वायर, ओके, एंड दे से कि मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर यूजिंग वर्नियर कैलिपर। दैट विल बी द प्रॉब्ली फर्स्ट असाइनमेंट फॉर यू, ओके? तो वहां पे क्या हो रहा है कि लेट्स से you do that experiment and you get 5 readings. Let's say you got one reading as 2.01 mm. Okay, some copper wire they have given you, and then you take one more reading, you found 2.02 mm. It's not matching. Okay, कुछ अलग ही मिल गया. Okay, then you took one more reading which is 2.01 mm again, which is nice because again first reading आ गया. ठीक है, ऐसे करके you take 4 readings. Okay. 0.3 ले लो, 0.2 ले लो. So you got 5 readings like this, 4 or 5 readings. Okay. Now, generally what you'll do in your lab, you'll take average of 5 and you'll say this is my answer, isn't it? Okay. So let's take the average. If I take the average, इसको लिखते हैं, you can write L bar or you can write triangle bracket में L. दोनों का मतलब average होता है. Okay. ठीक है. Or you can write L mean also. L mean. Some people write L average also. So that will be L1 plus L2 plus L3 plus L4 plus L5 upon 5. That will be how much? This will be 10. This is 4, 5.9, right? 2.01 है ना? 8, isn't it? That's what we'll get, correct? Okay. Now generally what we'll do, we'll accept this as answer. We'll say यही मेरा answer है. This is the length of the wire that we have got. But if I ask you, okay, what was the error in this measurement? Can you answer it? नहीं, because they have not taught us. Okay. अभी लेकिन हम लोग सीखेंगे ये कि अगर if I do an experiment, okay, and I get X number of readings, so how to calculate error in the answer?
that is our job to do. Okay, that is the first thing. So the first part of errors will be to calculate errors. Okay, so यहाँ पे the first topic is to calculate errors. And second job would be कि once we know how to calculate error, what if I give you two physical quantities with error. जैसे for example current measure किया उसमें error है, ठीक है, voltage measure किया उसमें भी error है. तो if I combine them, let's say if I calculate resistance which is V upon I, ठीक है, तो how will I get the answer? मतलब how to work with quantities which have errors, how to add two physical quantities with errors, how to multiply, how to divide, things like that. Okay, that part comes under combination of errors. So when you say you are learning errors, you have to learn two things. One, how to calculate the error in any experiment, okay, and second, how to work with quantities which will have error. How to add them, multiply them, divide them, things like that. Is it making sense? क्या करने वाले थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? Okay, so let's go ahead. अच्छा, तो see these are called as readings. L1, L2, L3, L5, or we just call them measurements. Okay, and this is called as actually this is the answer actually. This value I accept as my answer. तो इसको हम लोग बोलते हैं physics में इसको true value. So that is my answer, acceptable answer. Okay, अच्छा. Now before I go to that error calculation, there are two concepts that you should know. First, you look at this readings. You will understand कि इसके हर एक reading में we have only 3 numbers. You see that 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 numbers are there. Okay, और यहाँ पे if you see there are 4 numbers, right? ठीक है, so there is something called as significant figures. Okay, पहले वो सीखना पड़ेगा. कम तो my individual readings have 3 digits, right? ठीक है, but the answer that I got, look at it, there are 4 digits, right? ठीक है, तो ये इसमें there is something called significant figures. I'll talk about it. Okay, ऐसा नहीं हो सकता है तुम्हारा रीडिंग में 3 डिजिट्स है और इसमें क्या बोलते हैं 4 हो, ऐसा नहीं हो सकता है. ठीक है, इसको राउंड ऑफ करना पड़ता है अपने को. तो पहले तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड देन वी विल सी हाउ टू राउंड ऑफ देम. ओके, बिकॉज दिस आंसर इज नॉट एक्सेप्टेबल. एक्चुअली व्हाट आई विल डू इज आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस डिजिट एंड यू नो हाउ टू ड्रॉप इट. अगर नंबर मोर देन 5 है तो तुम लोग प्रीवियस नंबर को 1 से इंक्रीज कर देते हो, तो आंसर विल इज 2.02. इजंट इट? ओके, अच्छा, बट व्हाट इज, पहले वो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही पढ़ लेते हैं. ओके, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स करेंगे, फिर वो राउंडिंग ऑफ का टॉपिक आएगा एंड देन वंस वी नो दीस टू कॉन्सेप्ट्स देन वी कैन गो एंड कैलकुलेट द एरर्स आल्सो. ओके, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू, है ना? थोड़ा पर्पस समझ में आया? आ जाओ. ठीक है, विल स्टार्ट राइटिंग स्टफ फर्स्ट. ओके, तो एरर्स में राइट फर्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक एज सिग्निफिकेंट फिगर्स. I'll explain you what is significant figures. Significant figures, you should write. See, understand, I gave this example. Okay, if I give you a line to measure and let's say you measured the line and you found 14.3 as your measurement. Okay, now here I know that when I'm measuring it, okay, this 14 is confirmed digit. इसमें कोई डाउट नहीं है, 14 तो है वो, ठीक है, बट ये 0.3 है कि पॉइंट क्या है, मतलब थोड़ा कम है थोड़ा ज्यादा है, वो थोड़ा डाउटफुल होता है. ठीक है, खाली लास्ट वाला डिजिट ही डाउटफुल रहेगा, बाकी उसके पहले वाला सब कुछ इज कंफर्म डिजिट ओनली. समझ में आया क्या? अच्छा, ठीक है, तो ये जो सेट है, सेट ऑफ कंफर्म डिजिट्स एंड वन फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट. ओके, इसके साथ दिस इज कंफर्म डिजिट. So set of confirmed digits and first doubtful digit is called as significant figures. समझ में आया क्या? Now you should understand, okay, from science students perspective, ठीक है, this number and this number is different and this number is also different. You know why? ये तीनों अलग अलग measurements अपने लिए. Because ये measurement when I see, I get a feeling that I could measure 14.3. मतलब I could differ between 14.2 and 14.3 और I can say 14.3 और 14.4. मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना है पता है? 0.1 सेंटीमीटर. मतलब मिनिमम मेजरमेंट यहाँ पे कितना है? 0.1 सेंटीमीटर. समझ में आ रहा है क्या? बट इफ आई लुक एट दिस रीडिंग, इट टेल्स मी दैट आई कुड डिफर बिटवीन
14.29 एंड 14.30 उतना मेजरमेंट बता सकते हैं। मतलब इसका लीस्ट काउंट पता है इंस्ट्रूमेंट कितना है? 0.01, बिकॉज यू हैव रिटन 0.30 ना, तो 2 डिजिट तक यू कैन गो आगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ऐसे देखने में लग रहा है कि अरे 14.30 एक ही तो है, ऐसा नहीं है। ठीक है, रीड दिस इंस्ट्रूमेंट, आई प्रॉब्ली दिस इज अ मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, इट कैन टेल मी 0.01 का डिफरेंस। ठीक है, और ये वाला सिर्फ क्या होता है 0.1 का बता सकता है। इनफैक्ट दिस इज मोर प्रिसाइज। ठीक है, 0.001 का डिफरेंस कैन टेल मी। समझ में आ रहा है? तो फॉर अस दीज थ्री आर डिफरेंट मेजरमेंट्स। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। समझ में आया ना? मतलब व्हेन यू राइट लाइक दिस 14.300, it means you could tell me it for you it was not 14.299, it is 14.300 only। मतलब इतना, मतलब 0.001 का डिफरेंस ही पता चल रहा था यहाँ पे और यहाँ पे नहीं बनाना पड़ा था। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो लीस्ट काउंट, व्हेन यू लुक एट अ मेजरमेंट यू गेट अ आइडिया ऑफ लीस्ट काउंट। इज मेकिंग सेंस? ठीक है, समझा ना? मतलब अगर ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट वाज नॉट अवेयर, ओके, और उसको स्केल दिया है मैंने, उसने मेजर भी किया और वो जाके लिखा 14.3, उसे शो ऑफ करने के लिए 14.30 लिख दिया, शो ऑफ करने के लिए, मतलब उसको पता नहीं है। ठीक है, ओके, देन आई नो दैट स्टूडेंट वाज नॉट श्योर ऑफ दिस डिजिट एंड दिस डिजिट बोथ। ये तो पता, ये तो पहले से अनश्योर है, बिकॉज एग्जैक्टली बोल नहीं सकते कि 14.3 है कि नहीं, और ये उसने तुक्के में मार दिया। समझ में आ रहेगा? ठीक है, तो इन दैट केस दिस इज द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, दिस इज द सेकंड डाउटफुल डिजिट। Again the point, ठीक है, and when I am counting significant figures, I count only these. I ignore the second doubtful digits. Is it making sense? So when I say significant figure, it's set of confirmed digits, and the first doubtful digit I mean like that कि मतलब कभी कभी लोग ऐसे नंबर ऐड कर देते हैं तो वो सब अनकन्फर्म डिजिट को ऐसे बोलते हैं ना, मुझे लग रहा है कि ये 3.0 है, तुझे लग रहा है, मतलब हमको कंफर्म नहीं है। समझ में आ रहा है what I'm trying to say? ठीक है, in reality these three measurements are different for me because measurement, how do you write that measurement? It gives me the idea of least count of the device. इसीलिए I should count my significant figures carefully. So even if somebody goes and writes, somebody को इसको mm scale दिया और उसने ये लिख दिया, तो भी उसको पता होना चाहिए कि my significant figures are only 3, ये तुक्का वाला है। समझा क्या? तो इसको काउंट नहीं करेंगे, जब लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे तो उसको काउंट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले ही पूछ लेते हैं। Is making sense what I'm trying to say? तो पर्पस समझ में आएगा significant figures का क्या है। ठीक है, because if you don't know the significant figures, then we get a false feeling that कि this instrument was precise enough to calculate 0.01, ठीक है, which is not true। ठीक है, तो if I write like this कि my measurement is 14.03 but significant figures are only 3, तो I know that कि 1, 2, 3 इसको इग्नोर करना है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट 0.1 होगा। समझ में आया? So just write a line. Significant figures are set of confirmed digits and first doubtful digit, set of confirmed digit and first doubtful digit। ठीक है, full stop, next line। It gives an idea of precision of instrument। It gives an idea of precision of instrument। ठीक है, okay, you can write example। Let's say for a mm scale, मतलब अपना जो नॉर्मल स्केल यूज करते हैं उसको mm scale बोलते हैं। For mm scale we got a measurement of 14.3, here 1 and 4 are confirmed digits। Here 1 and 4 are confirmed digits। However, here 1 and 4 are confirmed digits. However, 3 is doubtful 1। 3 is doubtful 1। ठीक है,
So therefore, number of significant figures are 3. Therefore, number of significant figure, the count you can say is 3. There are certain rules that we use to calculate significant figures, count करने का. So we'll write those rules. Right? Rules for counting significant figures. Rules for counting significant figures. Rules for counting significant figures. Right? First rule. Rule number 1. All non-zero digits are significant. Are significant. That's the rule number 1. Example ले सकते हो, जैसे if I give you like this 14.43 or you can say let's say it's 1, 2, 4, 6, 8. तो यहाँ पे all numbers are non-zero. So if it is non-zero number we count it. तो यहाँ पे we have 4, यहाँ पे we have 5. Okay. Second rule is zeros between two non-zero digit are significant. मतलब if I have number like this 1404, then we'll say it is 4. Okay. Or you have 14.106, then we have 5. As long as the 0 is between two non-zero digit, we'll count it. Okay. Look at the examples. 0, अगर 0 नहीं है तो all numbers are significant. But if there is a 0 in between two non-zero digits, we'll count it. Okay. Then write rule number 3. Leading zeros. ठीक है. Leading zeros before last non-zero digit are not significant. मतलब ऐसा कुछ नंबर दिया है, ठीक है, कि you have 005, 06 या 503, something of this sort. So you should know that कि this 0 will be counted, okay, because it is between two non-zero digit. But ये जो 0 है इसको बोलते हैं लीडिंग जीरोस. समझा, पहले आने वाले जीरोस, इसको लीडिंग जीरोस बोलते हैं अपन. ठीक है, ये दिस इज द लास्ट नॉन जीरो डिजिट. तो लीडिंग जीरो लास्ट नॉन जीरो के पहले वाला जो भी जीरोस रहेगा, ठीक है, दोस लीडिंग जीरो शुड बी इग्नोर्ड. तो यहाँ पे आंसर 3 होना चाहिए. इनफैक्ट इफ आई हैव समथिंग लाइक 0.061 ऐसा कुछ दिया है, तो दिस इज आल्सो लीडिंग जीरो ओनली. ठीक है, तो लीडिंग जीरो को इग्नोर करो. आंसर विल बी 4. हाँ, I'll tell you. I'll talk about it. ऐसे लीडिंग जीरोस को भी इग्नोर. ओके. Next, for a number without decimal, rule number 4. So if for a number या फॉर अ मेजरमेंट बोलना चाहिए, नंबर से अच्छा, बट लिखा चलेगा. फॉर अ मेजरमेंट विदाउट डेसिमल, ट्रेलिंग जीरोस आर इग्नोर्ड. या ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट. That means if you have a number like this 5000, answer is 1, and or you have 40500, there is 3. Decimal is not there, huh? Okay. Okay. 5000 ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस आर इग्नोर्ड. Okay.
ये थोड़ा सा डाइसी होता है, बट फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस वी एज्यूम दिस टू बी ट्रू. ओके, इसमें थोड़ा, इसमें यू हैव टू नो द इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन आल्सो बिफोर यू इग्नोर दोस जीरोस मोस्ट ऑफ द केसेस, बट आई थिंक at your level it's fine. Okay, we can assume this to be true for most of the cases. Okay, because most of the cases you don't know the precision of the instrument. There is no information of instrument given to you. For a measurement with decimal, ठीक है, डेसिमल पॉइंट है अगर, तो ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट. That means if you have something of this sort, ठीक है, 5 1.00, then it will be significant. Or you have 409.0.00 ऐसा कुछ, तो नंबर में डेसिमल है अगर, तो ट्रेलिंग जो एंड वाले जीरो से उसको काउंट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आंसर शुड बी 4, यहाँ पे शुड बी हाउ मच, ऑल जीरोस आर सिग्निफिकेंट हियर, है ना. So it's 4 plus 2 6. Okay, or if I have something of this sort 1.60, it will be 3. As long as decimal point is there, all the trailing zeros should be respected. Okay, लिखा कितना हो गया. Right, one more, sixth one. For measurement less than 1, for measurement less than 1, leading zeros are not significant. मतलब ऐसा दिया है 0.000102, तो यू से डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर है तो कंसिडर करना चाहिए, नहीं. आंसर इज 3. एज लॉन्ग एज द नंबर इज लेस देन 1, तो लीस्ट लीडिंग जीरो विल नॉट बी कंसिडर्ड, इवन इफ इज अ डेसिमल पॉइंट, डजंट मैटर. हाँ, जीरो नहीं, लीडिंग जीरो का मतलब क्या होता है कि लास्ट नॉन जीरो नंबर के पहले वाला, समझा. लीडिंग मतलब नॉन जीरो नंबर के पहले वाला नंबर जीरोस. तो दिस इज लास्ट, यहाँ से लेफ्ट से राइट, ठीक है, तो दिस इज 1 इज द लास्ट नॉन जीरो नंबर, राइट. ठीक है, तो उसके पहले वाला सब जीरोस को इग्नोर कर देंगे, इसलिए मैंने बीच में भी एक जीरो रखा है. सी इफ यू समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, देखो 0.02125 ऐसा कुछ है, ठीक है, तो आंसर इज 3. ठीक है, और इफ यू हैव 0.001205, आंसर इज 4. गेटिंग इट, समझ रहे हैं. नेक्स्ट लिखो 7th वन, पावर ऑफ 10. पावर ऑफ 10 is not significant. Power of 10 is not significant. This is point number 6 or 7? 7. Power of 10 is not significant. Which means if you have 1.60 into 10 to the power minus 19, answer is, you could really ignore this guy, answer is 3. Just count this. ठीक है ना. If you have 9.1 into 10 to minus 31, answer would be, ignore this guy, 2. ठीक है, तो 10 का पावर को टोटली इग्नोर करना है. You have to ignore the power of 10. लिखा. नेक्स्ट पॉइंट, 8th रूल, चेंज इन यूनिट सिस्टम. चेंज इन यूनिट सिस्टम. Change in unit system. Next rule, I hope you have done this. Power of 10 का हो गया. उसके बाद next rule, change in unit system. Let's say you convert from CGS to SI, SI to CGS, should not affect the number of significant figures. Should not affect
affect number of significant figures. For example, if you are reading like this, ki you have 1.60 centimeter and you are converted to meters, so you should write like this 1.60 to 10 raised to minus 2 meters. यहाँ पे काउंटिंग कितना आ रहा है देखो, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है. Okay, so when you convert from one system to other system, let's say I am going from CGS to SI, okay, centimeter meter, so if you see the count, it's still 3. Okay, last one, right? Last rule. Exact measurements have infinite. Exact measurements have infinite number of significant figures. Exact measurements have infinite significant figures. Example. "13 students in a class." Example, 13 students in a class, or you can say 12 mangoes. तो एग्जैक्ट है, मतलब उसमें कुछ डाउट नहीं है. तो ऐसा एग्जैक्ट मेजरमेंट इफ आई राइट exact measurement, we say that infinite significant figure, infinite count, because if I say there are 13 students, तो I can write like 13.0 भी लिख सकता हूँ, 13.00 भी लिख सकता हूँ, 13.000000, मतलब वो प्रिसीजन इन्फाइनाइट है. इट इज एग्जैक्ट मेजरमेंट ना, तो यू कैन हैव इन्फाइनाइट प्रिसीजन. ऐसा नहीं कि मतलब कहना आई द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, इट्स एग्जैक्ट, मतलब तो इसमें कुछ डाउट नहीं, कैन ऐड कितना जीरो चाहिए उतना ऐड कर लो, समझा, और वो राइट रहेगा. इट मेकिंग सेंस. तो इसलिए बोलते हैं एग्जैक्ट मेजरमेंट है अगर, तो उसमें इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स है. समझे क्या? बेसिकली जो काउंटिंग वाला रहता है वो एग्जैक्ट होता है. एनी क्वेश्चंस हियर? You get this concept? ठीक है, तो we can reuse this rule. If they ask you to count significant figures, you have to make sure that you're following the rules. I'll just write few numbers, okay, and then you just write कि कितना काउंट है. खुद से करो, फिर हम क्रॉस चेक करते हैं. just for practice. Write your answers and then let's compare. ठीक है, let's compare. 4, 5, 3, 4, infinite. यहाँ पे कितना है? 5, इधर पे 6. ठीक है ना, इजी है ना.
राइट ठीक है. लेकिन राइट नेक्स्ट टॉपिक राउंडिंग ऑफ. See, in rounding off, we can have three cases. Digit to be dropped. Case 1, the digit to be dropped is more than 5. Okay. For example, it is let's say 16.589 और इसको ड्रॉप कर रहा है अपने को. ठीक है. व्हाट यू डू, प्रीवियस डिजिट को यू इंक्रीज बाय 1. करेक्ट. यू से देन दिस इज अप्रोक्सीमेटली. ठीक है ना. और लेस देन 5 है तो केस 2. लेस देन 5 है तो इट इज अनचेंज, राइट. तो प्रीवियस डिजिट इज अनचेंज्ड. फॉर एग्जाम्पल यही केस में इट इज 16.582 होता. ठीक है. I have to drop it. My answer would be 16.58 only. ठीक है. Okay. How about if it is equal to 5? मतलब for example if it is 16.585. What is the answer? 586. 9. इसमें what you have to do is actually you have to see. इसमें दो केस था. इसमें चेक करना पड़ता है कि प्रीवियस डिजिट क्या था. इफ प्रीवियस डिजिट इज ऑड देन वी इंक्रीज द प्रीवियस डिजिट बाय 1. इफ द प्रीवियस डिजिट इज इवन देन वी कीप इट अनचेंज्ड. समझा क्या. मतलब यहाँ पे इन दिस केस if this has to be dropped, answer is 16.58 only. But if the example was like this, 15 point, let's say 535, then the answer would be drop this. समझा. That we should know कि 5 को ड्रॉप करना है तो प्रीवियस डिजिट देखना पड़ता है इवन है कि ऑड है. इवन है तो we'll just leave it like that. If it's odd, then we'll increase by 1. So that is the convention that we follow. Okay, and there is some statistical reason behind it. We don't do statistics much. Okay, if you learn statistics, you'll understand why we do this. ठीक है. Write this. These are the rules for rounding off. These are the rules for rounding off. We'll add few points on errors, right? Okay, errors can be classified in broadly in two categories. Errors can be classified broadly in two categories. First लिखो systematic error. Errors can be classified broadly in two categories. First, we had systematic errors are those errors which can be mitigated or removed. Which can be mitigated or removed. Which can be mitigated or removed by using certain process to stop. Example, instrumental error or procedural error. Example, instrumental or
procedural error. Next is random error. Category number 2 is random error. For random errors, we can only reduce the impact of the error by taking large number of readings. We can only reduce the impact of error by taking large number of readings. With different permutation and combination. And average out the result. Okay, combination and permutation can be of X number of factors. It can be place, it can be different combination of the experiment itself. Okay. Next we go error calculation. Let's assume in an experiment. Let's assume in an experiment we have the following measurement. Okay, now you look at the board. We'll take this as our base, okay, to understand the formula. Okay, let's assume that we are doing an experiment and we found some n number of readings. So A1, A2, A3, A4 and AN. I got n number of readings. Let's say for example here I have 5 readings. So I can have n number of readings. Okay, and for this n number of readings, what is my true value? True value मतलब जिसको I am accepting as my answer. Okay, जैसे यहाँ पे true value is how much? It is 2.018, right? But इसको I told you ना कि if you look at the individual readings, what is the significant figures? What is the individual measurement का reading? Significant figures? 3 ना? इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, सबका 3 है. Okay, so all these measurements have 3 significant figures. So my true value should also have 3 significant figures. That means 4 नहीं हो सकता है, तो ये 8 को drop करना पड़ेगा. If I drop it, so this is number more than 5. Obviously ये छोटा नंबर है ये पे, तो इसको 2 कर सकते हैं, right? That's my answer. Okay, that's my true value. So I'll say true value is basically the average value. So we can say A bar, or we can say triangle brackets A, or you can write A average, or you can write A mean, whatever makes you happy. So that would be A1 plus A2 plus A3. We can add all the readings and divide by number of measurements, right? We can write, let's go ऐसे भी, we can write इसको summation of A upon n, है ना? ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखना है तो. Okay, so that is the average and that is my true value. Also you should write यहाँ पे कि this A bar is rounded off value, rounded off to least significant figure. Okay, which means if I had a reading like this, L6 अगर ऐसा है कुछ है कि 2.1 है, तो what is the number of significant figures here? 2. तो इसके में भी 2 होना चाहिए. All of your measurement you should check, और उसमें सबसे least number of significant figures जो है that should be taken. समझ में आएगा? तो यहाँ पे you don't have to bother because यहाँ पे I'm just keeping 3 only, so that is fine. Okay, so you should know that कि your true value should have least number of significant figures. Okay, so you have to round off accordingly. समझ में आया क्या? अच्छा, now this is my answer.
So I'm accepting that 2.02 is answer. Okay, now you compare. If I look at my answer and the first reading, तो first reading was accurate या उसमें error था? Error था obviously. ठीक है, what was the error? With the subtractancy it is 0.01, isn't it? ठीक है, so this is called as absolute error. तो इसको बोलते हैं अपन absolute error. That's the terminology we use. When I say absolute error, okay, it basically means we calculate absolute error at individual level. Okay, so if I want error in one, okay, तो इसको लिखते देखो कैसे, we write like this, right? Delta error in one. डेल्टा का मतलब एरर, एक्चुअली डेल्टा का मतलब डिफरेंस है ना. ठीक है, तो एरर निकालने के लिए डिफरेंस ही निकाल रहे हैं, ट्रू वैल्यू को रीडिंग से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. समझ में आया? तो एरर इन वन, एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, ऐसा रीड कर सकते हैं इसको. एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट इज इक्वल टू, इट विल बी रीडिंग माइनस द ट्रू वैल्यू. ठीक है, ओके, एंड वी डोंट केयर अबाउट द नेगेटिव साइन. समझा गया? मतलब अगर नेगेटिव आंसर है तो ये पॉजिटिव लेंगे उसको. ओके, तो वी कैन पुट अ मॉड हियर. So similarly, you can say error in reading 2 would be simply measurement minus the true value, and so on. So error in the nth reading would be nth reading minus the true value. Okay, so in this case, what will be my errors? Delta L1, delta L2, delta L3, delta L4 if I have to calculate, and delta L5. क्या आएगा बोलो? It will be 0.01. Second सेम ही है तो 0 है ना. इफ आई सबट्रैक्ट आई गेट 0, राइट? ठीक है, माय ट्रू वैल्यू इज आल्सो 2.02 एंड माय रीडिंग वाज आल्सो 2.02, तो 0 आएगा. ओके, L3 0.01. ओके, L4 0.01 ओनली, बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव वी डोंट केयर. ओके, एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, एंड L5 0. समझ में आएगा? तो व्हाट आर these आर एब्सोल्यूट एरर इन 1 2 3 4 5. एब्सोल्यूट एरर, इसको इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं अपन, है ना. तो दिस इज एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, एरर इन सेकंड मेजरमेंट, एरर इन थर्ड मेजरमेंट एंड सो ऑन. इज मेकिंग सेंस? ठीक है, अब इसका एवरेज निकाला तो इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट या एवरेज एब्सोल्यूट, जैसे तुमको बोला हम, मीन एब्सोल्यूट एरर. तो दे कैन आस्क यू टू कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर. तो इट इज डिफाइंड एज डेल्टा ए बार, तो एरर का एवरेज. ठीक है, ओके, एंड दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? Delta A1 plus delta A2 and so on, delta A1 AN upon N. In this case, what will happen? It will be 0.01 plus 0 plus 0.01 plus 0.01 plus 0 upon 5. Don't forget कि कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, अरे इसमें तो एरर है ही नहीं, तो काउंट ही नहीं करते इसको. ऐसा नहीं है. There are 5 readings, तो डिवाइड बाय 5 होना चाहिए. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो if I have to calculate delta L bar mean absolute error, so it will be in this case 0.03 divided by 5. That you should understand. ना, ठीक है, यहाँ पे एरर नहीं है तो उसको भूल मत जाओ. ठीक है, इग्नोर मत करो. ओके, इज मेकिंग सेंस? कॉपी दिस मच, देन आई विल गो अहेड. Anyway, so you got a two formula. Relative error का जनरल फॉर्मूला क्या है? It is error upon true value. If they ask you at a error level, individual error level, so just write the error upon the true value. But they will specify this question. Unless specified, you should always go for mean relative error. When they say relative error to you, it is always mean relative error. Unless they write कि I want in this particular measurement only. तो कुछ नहीं बोला है तो मतलब it is always mean relative error, and the formula is average error या mean error upon true value. So in our previous example, if you see, क्या आएगा देखो? If I want relative error, just write it here. It will be delta L bar upon L bar, no? So it will be some 0.006 divided by 2.02. ये आंसर है. समझ रहा है ना? मतलब it is the mean error upon true value. That's the formula. ठीक है, समझ रहा है ना कैसे कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, अच्छा. And sometimes they can go one step ahead and they can ask you percentage error. This is important actually. Percentage error. So formula is relative error into 100. Simple. Okay. So you should also know that relative error is also called as fractional error. तो कोई बुक में they will write इसको fractional error. So if they say fractional error या relative error, it's the same thing. Okay. Any questions? And percentage error पूछा मतलब into 100 कर दो बस. And again, when I say percentage error, for you it's always the mean relative error into 100. Because they will not ask you 90%, they will not ask you individual का.
पूछा तो कर सकते हो बट मोस्टली तो नहीं पूछते, समझ में आएगा। तो इन दिस केस देखो पीछे वाले एग्जांपल में, ओके, पीछे वाले एग्जांपल में इतिहास की परसेंटेज एरर इट विल बी वॉट एवर दिस इज क्या है इंटू 100, तो 0.6 अपॉन 2.02% सॉल्व करना पड़ेगा, समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो नाउ सी यू शुड अंडरस्टैंड योर फाइनल आंसर शुड बी always like this. Answer should be always a bar plus minus delta a bar, or you can write a bar plus minus percentage error. That's the final answer. For example, if you go back in this sum, I'll just get the values also so that I can write it. जैसे इसमें कितना है देखो 0.6 divided by 2.02. This comes to percentage error comes to 0.29. तो इसका मतलब क्या है देखो, if somebody asks me, जैसे if I do this experiment ना, जहाँ पे मैंने 5 बार एक्सपेरिमेंट रिपीट किया and I got 5 readings, ठीक है, and they ask me what is the length of that length of that wire or whatever, ठीक है, तो if I solve and give you this answer कि भाई मैंने सॉल्व किया 5 रीडिंग्स आ गए, ठीक है, एवरेज निकाला और दिस इज द आंसर, तो एट योर लेवल राइट नाउ इट्स फाइन कि हाँ भाई 2.02 इज एक्सेप्टेबल आंसर, बट व्हेन यू गो टू इंजीनियरिंग या हायर लेवल स्टडीज में यू कांट जस्ट राइट 2.02, ठीक है, यू हैव टू स्पेसिफाई द एरर आल्सो, ठीक है, तो रियल आंसर वुड बी 2.02 प्लस माइनस, इधर यू कैन राइट डेल्टा ए बार विच इज हाउ मच 0.06, या तो ये लिख सकते हो और यू कैन स्पेसिफाई 2.02 प्लस माइनस 0.29%, दोनों में से कोई भी आंसर चलेगा, समझा। सिर्फ और सिर्फ आंसर लिख के छोड़ नहीं सकते, ट्रू वैल्यू के साथ साथ उसका एरर कितना था वो भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज नो एक्सपेरिमेंट इज परफेक्ट, देयर इज ऑलवेज सम एरर, इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, तो दैट्स हाउ यू राइट द फाइनल आंसर, तो यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट ट्रू वैल्यू, दैट इज जस्ट द एवरेज, देन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो यू शुड जस्ट सब्ट्रैक्ट रीडिंग विद द एवरेज वैल्यू एंड दैट उसका एवरेज निकाल दो, यू विल गेट मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके, योर आंसर इज मोस्टली डेल्टा ए बार प्लस योर मीन एरर, ऐसे भी लिख सकते हो, बट इफ दे आस्क यू इन परसेंटेज फॉर्म यू हैव टू गेट द रिलेटिव एरर फर्स्ट विच इज एरर अपॉन ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर वो परसेंट डाल के कर दो, समझा क्या, ठीक है, राइट दिस फॉर्मूला एंड देन लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड यू कैन यूज योर कैलसी, इफ यू डोंट हैव कैलसी यू कैन यूज योर फोन टू कैलकुलेट दिस, है ना। लेट्स राइट द फॉर्मूला एंड देन we'll take an example. If you have any doubts, please ask. All these formulas are just straightforward formula. There is nothing rocket science about it. Right, this question, the diameter of a wire, fuse wire you can write, diameter of a fuse wire was measured using screw gauge and following readings were observed.
So these are the readings. Mm. Find the diameter of the fuse wire and its error. Try करो. Find the diameter, मतलब I am asking you the average value. Okay. See, look at this. So we have, first you have to get the average, right? So it will be what? D bar. That would be, you add everything, this will be how much? कितना है बोलो? 5.52 upon 5, which is 1.104. फिर इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो 1.10 ओनली. कहाँ पे थे हम लोग? 1.10 and then you get delta D1 कितना आएगा? 0.01 है ना? Delta D2 that will be 0. Delta D3 0.01 again. Delta D3 4 हो गया. D4 कितना है? 0.2. Delta D5 0. Oh sorry, 0 only. And then delta D bar will be how much? You take an average of everything, right? है ना? 0.04 by 5. This is right, है ना? So your answer can be written as D diameter will be actually true value, which is 1.10 plus minus 0.008. If they want percentage error, you can also get that. Percentage error would be 0.008 upon true value, which is 1.01 into 100. पूछा तो निकाल सकते हैं, है ना? Not a big deal. Okay. One second, I'll just pause this.